Please take a seat. Yes. Yes, ladies and gentlemen, that is the stellar cast, and of course, the director, and then we have the lovely Ruchika, and of course, A.R. Rahman sir, right here with us. We're going to be in conversation. I'm going to be asking them a few questions, hopefully answering all your questions through mine. So, are we ready? All right, well done. एक बंदे ने किया बस काफी है वो हमारे लिए, but we will still ask the questions. Thank you. You know, Pari, congratulations. And also congratulations on the film. Really, why I'm saying this, just soon after seeing just the trailer of the film, is because you know that there is something, and more than something special. And I also know that you had this deep-rooted wish of playing a musician and singing for yourself, you know, in the movies and in the roles that you play. How did it all come about? How are you feeling about it right now? I honestly feel scared. I feel like Chamkila has ruined the experience of every other film that I'm ever going to do now. Because I've worked with the best director, the best co-star, the best music director, the best location. I've done a role that I don't think not only me, any actor can get, like to immortalize a person, a musician, a legend like Amar ji. To be able to sing myself, मतलब सब कुछ तो कर लिया. मुझे अब लगता है मैं अगली पिक्चर में क्या करूँगी. I really feel कि अब मेरी तो बैंड बज गई है. That what am I going to do next? You know, shooting Chamkila was like meditation. You know, it was full of music, yet it was the most calm, silent, disciplined, beautiful, harmonious set. You know, usually हम set पे होते ये कर रहे वो कर रहे लाइट नीचे कर रहे ये कर रहे लाइट जा रहा है जल्दी करो. Like this is the sound you're used to on set. But here was the captain of the ship, who you can see is the most calm, meditative spirit. Same for Diljit. And same for me. I meditate early in the morning. हम लोग सुबह 6-7 बजे set पे पहुंचते थे. 5-6 बजे तक shooting हो जाती थी. So you know, at the end of the day, you just feel fulfilled. You feel like आप किसी, you know, गुरुद्वारा में बैठ के आई हूँ मैं बड़े घंटे. You know, I used to feel like that. So it was beautiful. I think मैंने कुछ तो ज़िंदगी में सही किया होगा कि sir gave me a film. I've been wanting to work with Imtiaz sir for more than like 9 years, I remember. Like the day that I'd come into the movies, I had made a list of directors. And sir's name was number 1. And I said, like, he'll never work with me, but I am putting him on the list, obviously. And it happened. And then I got to sing in his film. It's just, I'm a fan of this experience. And I'm spoiled now for life. Wow. You've really taken us, you know, we traveled with you in that answer, because you took us through set experience, your process, your career graph, and pehle naam likha tha because it was alphabetical, right? No. No? Aja. Chahti kaam karne ki. Imtiaz, yeah, I'm taking up for you over here. All right, now, you know, I know. He asked me not to stick to the script, so I'm not sticking to the script, because, you know, that's what friends do. They come and tear your scripts. No, and I now need to talk to someone who I feel like wherever he goes, there's a tremor, like there's a geographical movement that happens, and I love the way he's not acknowledging it right now. I'm talking about you, Diljit. He's looking away, like, what are you talking about? See, this is what I mean. This is what I mean. Like, you know, what he has achieved, and I'm not looking at him and saying this because he'll never accept it, because he's just so modest, but what he has achieved in one life, like I feel like most of us, and I'm generalizing us right now because we're facing him, have to like live 7 lives to achieve this. So, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ. ਮੈਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਧਰਤੀ ਹਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ. ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ. ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ. ਤੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੈਂ ਫੇਲ ਕਰਾਂਗੀ. ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਗਏ ਹੋ. ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਸਮਝਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਪਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹਰੇਕ ਦਿਨ ਨਵੀਂ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਆਈ ਹੈ.
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਚਮਕੀਲੇ ਦੇ ਥਰੂ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਓਗੇ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਪੁੱਛੋ No, but I mean, मैं पूछना चाहनी हूँ, but I'm very conscious right now, guys. What do I do? It's okay. Just go for it. Go for it. Just go. For Okay. Wait for what? Camera? ठीक है. No, more importantly, Diljit, where you are right now as a global rock star, as a musician, to be playing the character of Chamkila with a crew like this, like, whether it's A.R. Rahman sir, whether it's Netflix, Imtiaz Ali, Parineeti, with a crew like this. Tell me about your experience to like actually live the fact that you're such a global rock star and playing a musician in a film as a lead like Chamkila, because you're also deep-rooted like he was. Yes, 100%. Like Chamkila, कितनी देर से हम सुन रहे हैं एज एन म्यूजिशियन. मुझे लगता है कि पंजाब में या पंजाब से बाहर भी जितने भी म्यूजिशियंस हैं वो अभी भी चमकीला को फॉलो करते हैं, अभी भी उसकी कंपोजिशन को फॉलो करते हैं. वो लिरिक्स की चॉइस को आप साइड पे रख दें, लेकिन जैसे वो गाने कंपोज करता था वो एक साइंटिस्ट लेवल की बात है. वो आज तक लोग उसको एक एक लाइन पे गाना बन रहा है. वो कैसे बना गया, वो कैसे उसने वो डायमेंशन ओपन की, कैसे वो डाउनलोड की उसने वो कंपोजिशंस, तो वो तो हमें नहीं पता, लेकिन वो उसको आ रहा था और हम आज तक उसको फॉलो करते हैं. और जब हमें पता चला कि इम्तियाज सर फिल्म बना रहे हैं चमकीले पे, ये न्यूज़ तो बड़ी देर पहले आउट हो गई थी लेकिन बनी नहीं थी पिक्चर. Yes, that is correct. तो हमें लगा था कि यार ये शायद नहीं बना पाएंगे क्योंकि गाने तो पंजाबी में हैं, ये लोग कैसे, चमकीला तो हिंदी में बन नहीं सकता. लेकिन एक जो ये टेक इम्तियाज सर लेकर आए कि चमकीले ने स्टेज पे लोगों के लिए गाने गाए, लेकिन उसके अपनी स्टोरी क्या थी, उसके अपने क्या गाने हो सकते हैं, उसकी अपनी कहानी क्या हो सकती है, इस नज़रिए से हमने नहीं सोचा था. और उसके बाद जब पता चला A.R. रहमान सर म्यूजिक कर रहे हैं फिल्म का, तो मतलब इससे बड़ी बात हमारे लिए नहीं हो सकती थी. नेटफ्लिक्स पे फिल्म आ रही है, इससे बड़ी बात हमारे लिए नहीं हो सकती थी. परिणीति जी ने इतना प्यारा गाया फिल्म में, जब आप फिल्म देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इन्होंने कितनी मेहनत की है. अमरजोत को गाना चमकीले से भी टफ है क्योंकि उसके नोट और भी हाई थे, चमकीले से भी हाई थे. तो इन्होंने बहुत मेहनत की है फिल्म में और हम सब बहुत खुश हैं कि ये नेटफ्लिक्स पे आ रही है फिल्म. और आई होप कि चमकीला अगर सुन रहा है तो वो भी अगर संतुष्ट हो कि हमने जो काम किया है अगर उसको भी अच्छा लगे तो फिर सारा कुछ ठीक है. और बिल्कुल लगेगा. I want to go back to the question जब इम्तियाज जी ने कहा था, नरेशन दी थी, at what point did you think कि मैं ये फिल्म जरूर करूंगा? 1 घंटे के पहले कि जिस दिन इम्तियाज का फोन आया, कि बाद में आपने जवाब दिया? नहीं, मैं तो रेडी था ही. अच्छा. हाँ, मैं तो रेडी था क्योंकि ये इम्तियाज सर के साथ फिल्म करना मेरे हिस्से में नहीं आना था, ना ही मेरे ये सपने में था कभी. ये चमकीले की वजह से ही हुआ, इसका क्रेडिट भी चमकीले को ही जाता है. ये कहानी नहीं होती तो शायद मैं कभी भी इम्तियाज सर की फिल्म का हीरो नहीं होता. No, but this is a start, right, इम्तियाज? Yes. So ये चमकीले की वजह से हुआ है. आपकी वजह से भी हुआ. But I'm going to come to you, sir. You've also incorporated, apart from the music, you've also incorporated the fact that Diljit and Pari have sung live for you for the film Chamkila. Can you tell us a little more about that? So I think she was driving, and I said, "Can you sing?" I didn't know. Then she's so amazing on the FaceTime call. Oh, that Zoom call. Zoom call. Oh, you made her sing on a Zoom call? No. So can I Yes. quickly present the context? तो क्या हुआ था कि मुझे याद है last year या 2 साल पहले, was it 2 years ago? हाँ. I was on my way to a party that we were all at, by the way. It was, I think, Karan's birthday party. And I was on the way, and suddenly, sir called me. And उन्होंने कहा, where are you right now? Are you free? So I said, yes, sir, I'm free right now. I thought, like, he'll just have a chat with me. तो उन्होंने कहा, नहीं, दिलजीत, आप शायद US में थे. तो ये सर, हम लोग ना चारों अभी फटाफट Zoom कॉल कर रहे हैं. Can you do it? तो मैं लिटरली किसी ट्रैफिक जैम में थी. मैंने अपने ड्राइवर को बोला कि फटाफट गाड़ी साइड में रोको और सब चुप हो जाओ, अभी कोई सांस भी नहीं लेगा. एंड आई रिमेम्बर
कि वो जूम कॉल हुई एंड इट वाज सर, डीडी, मी एंड इम्तियाज सर, एंड हम लोग उस जूम कॉल पे थे. एंड उस जूम कॉल पे जो मुझे लगा चलो हेलो हाय हो रही है, यू नो इंट्रोडक्शन, मैंने कहा चलो इतना भी सही है, हेलो हाय हो गया. रहमान सर कहते हैं कि आपको गाना आता है, तो अब मैं क्या बोलूँ, तो मैंने कहा सर मतलब आई लाइक सिंगिंग. मैंने नहीं बोला आई कैन सिंग और नॉट, मैंने कहा सर आई लाइक सिंगिंग. मुझे लगा सेफ आंसर, राइट. ही सेड ओके सिंग एंड शो. Indulgence. I could not believe it. मैंने कहा गई पिक्चर, गई, अब तो नहीं मिलेगी, क्योंकि he works with the most genius singers, artists in the world. अब मैं गा रही हूँ और मैं बोल रही हूँ देखो मैं कितना अच्छा गाती हूँ, मेरे को जरा कास्ट कर लो. मतलब it was the, but मैंने I remember I sang दमादम मस्त कलंदर या कुछ, मैंने कहा चलो पंजाबी जो भी मुझे आता है मैं गा रही हूँ. But at this point you were cast in the film. Yeah, but clearly there was like an audition still going on. कि मतलब चल रहा है, वो process चल रहा था. नहीं, I was doing the film for अच्छा. sure, but of course I was telling sir कि सर सभी गाने मैं गाऊंगी, मतलब अब तो मैं किसी को आने ही नहीं दूंगी पिक्चर में, मैं ही गाऊंगी बस. तो ऑफ कोर्स इन द फिल्म हमारे ओरिजिनल चमकीला और अमरजोत के जो ओरिजिनल गाने हैं हमने वो भी गाए हैं, एंड सर के जो ओरिजिनल गाने हैं वो भी हैं. तो दैट्स व्हाई ही ऑडिशनड मी. सो आई वाज जस्ट टेलिंग यू कि कैसे हुआ ये कॉल. Sir, please. What was the question? I'll remind you the question. Not fascinating. This is a very good answer without a question, but otherwise, the question, sir, was about the live locations and how you incorporated Diljit and Parineeti to sing. So actually we had around 3-4 days of jamming at my studio to get the soundscape of the real live musicians. They all came in, and 3 days we just recorded, just the feel of it. And then we got Diljit and then Parineeti both to record all those original. We didn't want to change anything. I didn't want to touch that stuff. So it was very puristic, and they've done an amazing job of that. Well done. I mean, we've been hearing a little bit. We want to hear the rest of it when it comes to the compositions. Of course, we're very excited to hear their voices. And hopefully, at some point, they will agree. But I'm going to come to you, Ruchika. Mission Majnu, Railway Men, and many other very, very strong choices of scripts. And then, of course, Chamkila. What's your process when you say, okay, this is it, this is the one we're going to go with? You know, I think the one common thread between all of the films that you've mentioned or shows are that they're based on true life instances or based on a person. And I think there is really no process, and that's the process, because every film is so different from the other. And like I always say, that whatever mood you're in, if you want to be happy, you've got something on Netflix. If you're not, you're in the mood to really be thrilled, we've got something. But real stories have a way of connecting to audiences because they are so raw in what they're trying to tell. They're so real. So even when we read the script of Chamkila, I think that was the time that we all kind of decided to do this together. For us, it was the emotion that we connected with. It was so real, it was so raw, and a day when everything feels like a project and feels like a product, I think this really felt like a film. It felt like a piece of someone's heart. And Diljit very humbly said that because of Chamkila, we've all come together and they've got an opportunity to work with each other. But likewise, I think someone very, very incredible and talented, ahead of its time, like most creative people are, created music that resonates till today. I mean, from the 80s to 2024, we're still playing Chamkila song. There can be nothing more evergreen and more universal than that. So, and the fact that you've made this film, like I feel like the entire team has made this film, even the few people who didn't know or don't know, that's what a great film does. It kind of, catapults the person, the story, and, the music, the narrative, all of it. Diljit, I'm going to ask you a question. जब आप बड़े हो रहे थे, when you were a young boy and you were interested in music, did you grow up on Chamkila's music? Did you listen to a lot of music of his? Were you inspired in some way? जब 14-15 साल का हुआ तब चमकीला आया लाइफ में. उससे पहले तो घर में जो सुनते थे, छोटे बच्चे को तो कोई अलाउ नहीं होता, उसकी तो कोई चॉइस नहीं होती. जो बहन सुन रही है वही सुन रहा हूँ हिंदी गाने, जो डैडी सुन रहे हैं कुलदीप मानक साहब, तो मैं कुलदीप मानक साहब सुन रहा हूँ. तो बारी तो तब आती नहीं थी, ऐसा तो था नहीं कि हमारे पास फ़ोन है और हम चॉइस कर लेंगे. वो तो एक टेप रिकॉर्डर है, या डैडी सुनेंगे या बहन सुनेगी, तो छोटे बच्चे की क्या बारी आएगी. सो जब खुद बाहर गए जाना, फिर चमकीला इंट्रोड्यूस हुआ,
तो फिर पता चला कि यार ये क्या कमाल का आर्टिस्ट है. You know, but जब हम बात कर रहे हैं, even when Imtiaz, when he started off in his first answer, when he spoke that, you know, there's a very large part where we talk about our films and we talk about the fact that we need to tell stories of masses. And there is a kind of a common thread between you and him. You come from a place in Punjab. Your bearings have been, your first steps into anything creative have been music, and like it was for him. And then onwards and upwards. Did you ever feel that when this story came to you, you were like, okay, this is it, this is the story that I was always waiting to tell or show everyone? नहीं, मेरी कभी कोई ऐसी इच्छा नहीं रही. मुझे लगता नहीं कि मुझे ये करना चाहिए या ऐसा करना चाहिए. मैं ऐसे कभी अपने आप को ऐसे कैपेबल किसी चीज़ के लिए समझा नहीं. जो आया वो मेरे लिए ब्लेसिंग है. तो ये फिल्म भी मेरे लिए ब्लेसिंग की तरह ही आई, और मैं बस ओपन रहता हूँ कि ब्लेसिंग्स आ जाएं, बस दैट्स इट. जी, हमें भी आपकी blessings चाहिए. Diljit Dosanjh casually putting it out there that he just has become a global star, moving one step at a time, blessing after blessing, as it should always be. Pari, somewhere you got a few diction classes from Diljit. What was that like? Was he strict with your diction, or was he like, ठीक है आप ये बोल दो फिर कोई बात नहीं हम डब में संभाल लेंगे? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है एक्चुअली. क्योंकि इवन तो आप जितने भी पंजाबीज हैं रूम में, अगर हम पंजाबी बोलते भी हैं, हम एक शहरी पंजाबी बोलते हैं, क्योंकि मैं एक शहर से आती हूँ. और जो चमकीला और अमर जी उनका जो डिक्शन था, उनकी जो वोकेबुलरी थी, जो लिरिक्स थी, वो जो एक एक्सेंट थी, वो मेरे अंदर नहीं है. तो वो जब भी मैंने गाना रट तो लिया, और उसमें वर्ड्स भी ऐसे हैं जो काफ़ी मुझे समझ नहीं आते. आई अंडरस्टैंड पंजाबी, बट ये बहुत ही ठेठ पंजाबी है. तो मैं हमेशा डीडी के पास जाती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि इससे बेहतर कोच हो नहीं सकता. एंड हम हमेशा साथ में ही होते थे सेट पे, 24/7 हम लोग रिहर्सल्स करते थे. एंड ये जो अमेजिंग यहाँ पे जो बैंड बैठा है उनके साथ होते थे. तो ही वॉज द बेस्ट टीचर, क्योंकि इनको चमकीला के बारे में सब कुछ पता था. तो मैं हमेशा गाने से पहले एक रिविज़न करती थी कि अच्छा अब आप सुनो मुझे गाते हुए. तो मैं पूरा गाना गा के फिर वो उनको ठीक करते थे कुछ वर्ड्स, और फिर ही मैं टेक करती थी, क्योंकि जो हम गा रहे थे वो ही साउंड एक्चुअली पिक्चर में है जो हमने गाया है. Yes. तो वो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए. ऐसा नहीं है जैसे हम लोग टेक देते हैं तो टेक अच्छा नहीं हुआ, 15 टेक कर लिए, फिर स्टूडियो में जाके कुछ बहुत हमने ठीक कर लिया, मैनेज, वो बहुत रियल था. तो इट्स लाइक डायलॉग बोलने जैसा. तो वो ही ओनली टॉट मी. वो अभी तक मैं उसी से पूछती हूँ जब भी मेरे को ऐसे कोई ठेठ लाइन गानी होती है. Well, I just have to tell you, we're all very jealous of the perfect Punjabi coach that you have. And I'm sure your Punjabi has become better over time. Not that it needed too much work. I know I've heard you speak in Punjabi, it's fabulous. Right before we let all of you go, Diljit, Parineeti, biggest takeaway from the sets of shooting Chamkila? सबसे बड़ी लर्निंग सेट से एक कोई ऐसी चीज़ जो आपको याद रहेगी, you know, while you were filming Chamkila? पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जब बहुत सारे अच्छे लोग और साफ दिल के लोग जब साथ में काम करते हैं तो वो कुछ स्पेशल बनाते हैं. मैं कुछ ये नहीं बोल रही हूँ कि इस पिक्चर का रिज़ल्ट क्या होगा, कि ऑडियंसेस क्या बोलेंगी, वो बाद की बात है. बट मेरा जो, जैसे मैंने पहले भी कहा कि मैं स्पॉइल हो गई हूँ, दैट इज़ बिकॉज सर से लेके मतलब हर एक जो वहाँ ये पिक्चर बना रहा था ना, मैंने एक श्रद्धा देखी है, मैंने एक सच्चाई देखी है, मैंने एक प्यार देखा है. किसी ने इसको फिल्म की तरह नहीं बनाया. इट वाज जस्ट लाइक 200 पीपल जस्ट लिविंग टुगेदर इन हार्मनी एंड जस्ट प्यार से काम करना. तो फॉर मी द बिगेस्ट टेक अवे इज़ कि पिक्चरें ऐसी बननी चाहिए. यू नो, पिक्चरें प्रोजेक्ट्स की तरह नहीं बननी चाहिए और किसी गलत कारण से नहीं बननी चाहिए, बस दिल से बननी चाहिए. सो फॉर मी आई विल ऑलवेज बी लुकिंग फॉर दैट नाउ. And as are we. Same. So yeah, even Diljit is saying कि पिक्चरें जो है दिल से बननी चाहिए, but it's fine. I'm answering for him, Pari's answering for him. आप जो बोलो आप, अगर आपको यही, हाँ, डिटो. नहीं, सच मेरा ही है. Okay. सारा कुछ बोल दिया ना. Alright, sir. पर ये भी सेट पे होता था कि वो ज़्यादा बोलती थी आपसे? नहीं, ठीक ही बोलती.
आपसे तो ज्यादा ही बोलती हूँ. हाँ वो तो मैं एक्चुअली काफी लोगों से ज्यादा ही बोलती हूँ. वेरी गुड. Yes. Imtiaz, right before we let you go, what's the many things or that one thing that we should all look forward to when it comes to Chamkila? Many things, many things are already on stage, and many things have been said. But कुछ दिन पहले मुझे किसी ने बोला कि दिलजीत वहाँ विलेज में शूट कर रहे थे पंजाब में प्लेइंग चमकीला, बट ही हिमसेल्फ इज अ बिगर स्टार. उस वक्त मुझे स्ट्राइक हुआ. मुझे लगा कि द वे दिलजीत हैज परफॉर्म्ड in a land where everybody is actually scared to even look at him because he's such a big star. We are talking about small town Punjab. वहाँ पे ये जब एक्टिंग कर रहे थे चमकीले की, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस आदमी को ये नहीं पता था कि मैं कौन हूँ. इनको ये लग रहा था मैं चमकीला हूँ, मैं चमकीले की एक्टिंग कर रहा हूँ या मैं चमकीले की तरफ जा रहा हूँ, उसके गाने गा रहा हूँ. इनकी वजह से मुझे भी ये एहसास नहीं था कि ये कौन है, कि ही इज नॉट लाइक ही इज नॉट एनीथिंग, ही इज जस्ट चमकीला, यू नो. और मेरे साथ साथ परिणीति को, बाकी जो क्रू एंड कास्ट थे एंड वहाँ के जितने भी लोग थे, उनको भी यही लग रहा था कि ये रियल में हो रहा है, वो चमकीला परफॉर्म कर रहा है, और दिलजीत वॉज नॉट देयर. सो ये चीज़ बहुत 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 मुश्किल है, और ये एक्चुअली मुझे बाद में अभी स्ट्राइक करती है कि उन्होंने नहीं सोचा कि मैं कौन हूँ. When somebody does something like that, it makes it memorable. I don't think Parineeti was thinking, who am I? She was just thinking, who is Amarjot? You know, and that is why we do the work we do. तो ये आप लोगों का धन्यवाद, पाजी आपका धन्यवाद. मुझे बाद में बहुत सारी चीज़ें आपकी स्ट्राइक करती हैं कि आप जो चीज़ हो, एंड अभी इन्होंने कहा कि आपने बहुत कुछ ऑलरेडी अचीव कर लिया है, बट मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये बस आपकी शुरुआत है, और आप जहाँ जहाँ जाओगे हम भी आपके साथ रहेंगे पाजी. एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट दिस फ्रेशनेस केम इन टू माई लाइफ ऑफ डूइंग दिस फिल्म. आई एम थैंकफुल टू नेटफ्लिक्स टू टेक इट अप विद इक्वल लव. And thank you very much. Right, that was a beautiful statement, beautiful moment. Always nice to see so many emotions on stage. So, before we let you go, if you had to sum up the music of Chamkila for us, how would you sum it up in the most A.R. Rahman way? I think it's a part of Indian heritage, defined again. So true. Yeah. That's absolutely wonderful. Ruchika, any last words? Just pure magic. Aha, all right. Speaking of pure magic, जब मूवी म्यूजिक पर बेस्ड हो और खुद हमारे पास इतने जो बड़े सुपरस्टार्स हैं स्टेज पर, when it comes to इम्तियाज, परिणीति, दिलजीत, A.R. Rahman, and of course Ruchika for making this happen, हम ऐसे कैसे जाने दें? You think that we should ask Pari and Diljit to yeah, to sing a few lines? You think we can request them? I think if the cheer is loud enough, maybe they turn around and say yes. Yeah, can we say no to this audience? No, we can't. How do I argue with Diljit now? You tell me if he says no, then should we say please once more? Please. मैं गा दूंगा जी, कोई बड़ी बात नहीं है. वो ऐसी बात है, वो सर बैठे हैं तो मतलब बहुत ये दिग्गज हैं, हम तो मतलब इनके सामने जीरो भी नहीं है, तो इसलिए थोड़ा वो आता है. आप परिणीति जी शुरू. मैंने जूम कॉल पे गा दिया था, याद है? हाँ जी, हाँ. But we don't, I mean, we love Mast Kalandar, but that's not the song we want you to sing. We want you to sing what you sang in the film. But मैं Would you like to come there or sing wherever? बजा दो. अच्छा ठीक है. नीचे कर. ना 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 ना. ओरिजिनल. यार मैं मानूंगी. नहीं नहीं.
नहीं ओरिजिनल चमकीले की बात हो रही बहुत है बहुत है है कुछ बहुत ये अपने ही Please, बंदे please, अपने ही please. बंदे बैठे हैं है ना हाँ यही अब क्या आवाज आ रही है अरे अरे बहुत चल अच्छी आधा बहुत अच्छी आवाज आ रही है ये पता है सेट पे भी ऐसे ही होता था। मैं आपको जल्दी से 30 सेकंड में बताती हूँ। चमकीला जी का जो सुर था ना वो बहुत ऊंचा था और अमर जो फीमेल आवाज थी उनको मैच करने के लिए उनका 10 गुना हाई होता था। तो ये हमेशा चीटिंग करते थे सेट पे। मैं एक स्केल सेट करती थी और ये पीछे ये देखो ये जो सेटिंग चल रही है ना पीछे से ये सेट पे भी होती थी। But I don't know what setting, but he's saying no, no, no at the back. Is that what you're... Yeah, he's doing it now also. No, no, see? ओके ओके गाइस बिहेव बताओ स्केल। आधा नीचे का। याद हो यार जी शाह टन 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 ਛੱਟ ਲੈ ਤਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੜਕੇ ਵੇ ਮਿੱਤਰਾ ਮੈਂ ਖੰਡ ਬਣ ਗਈ ਛੱਟ ਲੈ ਤਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੜਕੇ ਵੇ ਮਿੱਤਰਾ ਮੈਂ ਖੰਡ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਕਾਲਜੇ ਨੂੰ ਠਾਰ ਕਰੋ ਮੋੜੀ ਨਾਰੀ ਯਾਰ ਤੇ ਕਾਲਜੇ ਨੂੰ ਠਾਰ ਕਰੋ ਮੋੜੀ ਨਾਰੀ ਯਾਰ ਪੈਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮਡੀਰ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਲੜ ਲੜ ਜੱਟ ਮਰਦਾ ਲਾਲ ਹੱਕ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਨੀ ਯਾਰ ਕੂੜਾ ਪੱਤ ਵਰਗਾ ਲਾਲ ਹੱਕ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਨੀ ਯਾਰ ਕੂੜਾ ਪੱਤ ਵਰਗਾ Kya baat hai! Really, that was absolutely fantastic. Parineeti, Diljit, kya baat hai? Kya baat hai? And aap logon ne bhi really, really, absolutely fantastic. Can we hear for Parineeti, Diljit, and the entire team of Chamkila? And now we'd like to request for a photo opportunity. Ace Director Imtiaz Ali. Pari Wali Pari. The one and only Diljit Dosanjh. Mr. A.R. Rahman, sir. We have the lovely Ruchika from Netflix and Mohit Roy Chaudhary.